Okay, so we are live now. Recording is on. So there are some doubts. One of the candidates has asked me one doubt. So let me show you that diagram. So this is one question, beta, which has come in some past paper. Past paper. Are you able to see this, beta? Yes, sir. Quite clearly so. Okay. So they tell us a stellar observation gave vessel's position, latitude and longitude is given. Find the compass course to steer to raise a lighthouse right ahead. The current is setting northwesterly 2.2 knots. Visibility was 5 miles. Height of eye is 12 meters. At 23:12 hours, using radar, vessel's position was found to be this one. Find the actual set and drift of the current. So what they have done here is they have found out the geographical range, and from the geographical range, they have used this concept, which we had done, raising a lighthouse right ahead. So what they have done is, as per our engine speed, the time which we take to cover this much of distance, 18.9 miles in this case, we find out what will be the drift of the current, and we apply the current vector for that much time. So you can see here, this is the current vector which they have applied. Let me pick up red color. This is the current vector which they have applied. And from the initial position to this vector, they have joined the line. That's what we had done. So let me mark it with green color. This becomes your CMG. And then they keep the compass at the lighthouse and draw this arc of 18.9 miles. Wherever it cuts, see, this is cutting here. You join that point with the lighthouse. That becomes the course to steer. So this is the course to steer. So this is the first part of the question. Okay, so that's rightly done. Now in the second part, they are asking that at 23:12, a radar fix was obtained. So find out the actual set and drift of the current. So वो इस diagram में बेटा गलत लिखा हुआ है. So I'll tell you how it is to be found. Let me erase them. If you want to find the actual set and drift of the current, what we have to do is, we know our initial fix, which is at number 1. This is our initial fix. We know our final fix, which is at number 5 here. So let's join these two. When you join these two, that is number 1 to number 5, this line when you join, this is basically your actual course made good. This is the actual course made good. That's why from number 1, you find yourself at number 5. Now you also know what is the course you are steering. You had calculated the course to steer. So you apply that course to steer at the initial position. So we apply the course to steer. It is the same CTS which we had calculated here. So we mark it for the required time using our engine speed. So you cut it for whatever time it is required. And from this point now, if you draw a vector to your final position, this is the actual set and drift of the current. So is it clear, beta? Sir, ये last वाला part दोबारा बताना. Okay. What I have done is I have joined my initial position, that was number 1, to my final position, which is given in the question. That's this one, number 5.
और इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे ये ग्रीन कलर का वेक्टर मिल गया. दिस बिकम्स माय कोर्स मेड गुड. Okay, so I have the course made good vector. Now I also know what is my course steered. This I had calculated in the first part of the question. Okay, they had asked us find the course to steer. So I use the same course to steer. That is what I was steering. Use it in the blue color vector and cut it for the required time. Wherever this course to steer vector ends, if I join that with my final position, that gives me the current. So this red color vector which we see here is the current vector for this much time. Okay, sir. Okay. Okay, beta. Okay. And the time it cuts is as per that 18.9 nautical miles. The time is calculated as per the distance for being right, right? Time for the current vector which we applied initially is as per the distance at which it should be right hand. Yes, that is 18.9 miles. Yes, that distance divided by your engine speed. Yes. Okay. Okay. सर लास्ट तो बेटा एग्जांपल में वो जियोग्राफिकल रेंज निकाली ना, विजिबिलिटी दी हुई है तो सर लुमिनस नहीं निकालनी चाहिए. yeah, exactly. Let me revisit the geographical range concept also. Just give me a minute, beta. नहीं तो उसमें तो आपने सर वही बोला था ना, PLR एंड GR दोनों निकाल के whichever is lesser we'll take that one. हाँ बेटा, मैंने करवाया था आपको बेटा ये. सर आपने PLR बताया था अपना और GR भी पढ़ा दिया था, तो आपने पढ़ाया तो था, yes of course. उसमें आपने बताया था कि whenever you are calculating it, so you have to calculate both and whichever is lesser you have to take that. Right, that's right. Let me show you once again. This is it. Okay. Okay. बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग रेजिंग डिपिंग भी बोल देते हैं या फर्स्ट लास्ट साइटिंग भी बोल देते हैं. Okay, just give me 1 minute, beta. Just 1 minute. ओके, सो बेटा इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, या तो हम इसे रेजिंग डिपिंग टर्म से यूज करते हैं या फर्स्ट लास्ट साइटेड. क्वेश्चन में ये दोनों चीजें जो हैं इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो ये है that the range of the light which is given on the chart, this range is basically what we call as the nominal range of the light. Nominal range क्या होती है? Nominal range is the range which is applicable in a met visibility of 10 miles. तो अगर 10 miles की visibility हो तो ये लाइट हाउस हमें 14 miles की रेंज पे दिखेगा. That is the meaning of the nominal range. Now, in these questions, when we want to find out when a lighthouse will be raised or dipped, or when a lighthouse will be first or last sighted, we calculate its present luminous range. What is this present luminous range? I just now told you that the range given on the chart is applicable for 10 miles visibility. Now, if the visibility is better than 10 miles or less than 10 miles, then lighthouse will not be visible at this much range. The range would change. If the visibility deteriorates, you will be able to see the light at a shorter distance. If the visibility improves, you have clear visibility, you may be able to see the light from a very large distance, a far off distance. So this is known as present luminous range. How do we obtain this present luminous range?
we obtain it from the luminous range diagram. We enter into the luminous range diagram using the nominal range. Say, for example, the nominal range of a light is 20 miles. So we enter with 20. We go down up to the visibility which we have. Okay. Say, for example, if we have a visibility of 20 miles. So we go down up to the visibility condition and go horizontal, and it gives us the present range of the lighthouse. The present range is 32 miles. So this light in a visibility of 20 miles will be visible at a range of 32 miles. This is known as PLR or LR, present luminous range or luminous range. Now the same light, if you are trying to see it in a deteriorated visibility of 2 miles, the same light will be visible only at a range of 6 miles. So the PLR in this case is 6 miles. So we calculate the PLR of the light. That is one thing. And along with it, we calculate the geographical range of the light. Geographical range is dependent upon the curvature of the earth, because you need to be at a certain height so that you can see the light. If your height is lesser, okay, let us say if the height of the observer is only this much, you will not be able to see the light because the curvature of the earth is going to obstruct the line of sight. So the range is limited because of the curvature of the earth, and this is known as geographical range. So how do we calculate this geographical range? The formula is 2.095 into root capital H plus root small h. Capital H is the height of the light, small h is the height of the eye. Now, once you have both these ranges, you have the PLR, you have the geographical range, compare both of them. Whichever is the shorter one or the smaller of the two, that is the first last sighting distance of that particular light. Now, people also sometimes write it as raising dipping distance of the light. Okay, both terms are interchangeable. So whichever is the shorter of them is used. If geographical range is shortened, the distance of first last sighting is the geographical range. If PLR is shorter, then the distance of first last sighting is the PLR. That is the concept. ओके सो अब बेटा इसमें एक चीज है जो हमारे एग्जाम में थोड़ी सी जो है एग्जामिनर समटाइम्स दे डोंट कंसिडर इट। वो चीज ये है कि जो रेजिंग डिपिंग वर्ड का लिटरल मीनिंग है, रेजिंग डिपिंग वर्ड का लिटरल मीनिंग है व्हेन ए लाइट इज सीन फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एट इट्स जियोग्राफिकल रेंज, means if a light is obstructed because of the curvature of the earth, we call that light as the light is raised or the light is dipped. If you are going towards that light, we call it the light is raised. If you are going away from that light, we call it the light is dipped. Okay, that is the literal dictionary meaning of the raising dipping term. First last sighting is related to the shorter of the two, but क्वेश्चन में अगर उन्होंने रेजिंग डिपिंग वर्ड यूज किया है, वी कैन नॉट टेक इट फॉर श्योर कि वो जियोग्राफिकल रेंज की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज द एग्जामिनर आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ओके, डिक्शनरी मीनिंग ले तो वो जियोग्राफिकल रेंज होनी चाहिए, और हम क्वेश्चन में इसको बेसिस लेके नहीं चलते, हम फिर भी चेक करते हैं कि दोनों में से छोटी रेंज कौन सी है, और अगर PLR छोटी है तो हम PLR को ही कंसिडर करते हैं। सो इज दिस बिकमिंग क्लियर इन द माइंड बेटा? सर इसके ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। अभी जैसे ये लास्ट एग्जांपल आपने कराया था सर, उसमें बस टेंजेंट बना के वो पोजीशन बता देनी है ना, और कोर्स कंपास कोर्स टू स्टे। ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। सर ये जियोग्राफिकल रेंज का जो फॉर्मूला है, ये कैप्टन एसके पुरी में डिस्टेंस इन माइल्स के लिए अलग दिया हुआ है, और सॉरी फीट के लिए अलग है, मीटर्स के लिए अलग दिया हुआ है। दैट्स राइट बेटा, फीट और मीटर दोनों के लिए अलग अलग है।
तो इसमें मीटर में सर 2.08 दिया हुआ है इनटू अंडर रूट वही कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच। आपके वाले 2.095 है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन बिकॉज़ मैं रिवाइज कर रहा था पूरा चार्टवर्क पिछला, तो देन आई फाउंड दिस वन। ओके। तो थिंक अबाउट इट बेटा, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए सर, रुक गए, इसलिए मैं पूछा आपसे। ओके ठीक है बेटा, अभी बताते हैं। लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। Where is that picture gone? Yeah, हाँ बेटा, पहले तो इसमें कोई डाउट था आपको? बेटा बताओ, इसमें क्या डाउट था? सर इस क्वेश्चन में डाउट ये था कि इसने करंट ये पॉइंट नंबर 3 से क्यों लगाया है सर? इसे क्या पता कि 2 3 1 2 पे हम 3 पे हैं। ये गलत है बेटा, दिस इज रॉन्ग। ये सोल्यूशन गलत है बेटा। लास्ट पार्ट जो उसने किया है ना, 3 to 5 जो करंट लगा दिया है, वो गलत है। दैट्स रॉन्ग बेटा। वही तो मैंने आपको बताया अभी, दैट एक्चुअल जो सेट एंड रेट है वो 3 to 5 नहीं है। इस क्वेश्चन में सर एक्चुअल में मुझे इनिशियल टाइम देना चाहिए ना सर इनको, तभी मैं 2 3 1 2 की एस्टिमेटेड पोजीशन निकालूंगा, वहां से फिर जो इसने पोजीशन की है वहां का करंट लगाऊंगा, मींस ज्वाइन करके कैलकुलेट करूंगा कि क्या है। इसमें इनिशियल टाइम इन्होंने नहीं दिया बेटा। नहीं सर, इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ सर। stellar observation, ओके 2312 यूजिंग रडार। ओके, तो बेटा आप 3 hours and 12 minutes, how has he taken this 3 hours and 12 minutes then? यस सर, वही बात है। ओके, इसमें बेटा होना चाहिए बिकॉज इनिशियल टाइम सर क्वेश्चन में कोई इनिशियल टाइम ही नहीं दिया हुआ ना सर। इसमें तो बेटा देना पड़ेगा इनिशियल टाइम। यस सर, उसी के अकॉर्डिंग मैं 2 3 1 2 की पोजीशन निकालूंगा जो मेरी एस्टिमेटेड होगी। या दैट्स राइट, एग्जैक्टली। एंड प्लस सर एक और चीज कि अगर जियोग्राफिकल रेंज 18.9 माइल्स दी हुई है तो रेजिंग में सर टेंजेंट बना के नहीं करेंगे? 18.9 पे नहीं बेटा, इसमें रेजिंग ए लाइट हाउस राइट अहेड है ना। रेजिंग ए लाइट हाउस राइट अहेड है, तो इसमें टेंजेंट नहीं बनाएंगे बेटा। इसमें तो जस्ट ये जहां पे ये आर्क कट करेगी, दैट विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल ड्रॉ द CTS। सर जैसे नॉमिनल रेंज जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। या दैट्स राइट। जैसे ल्यूमिनस रेंज, सॉरी, जो इंटेंसिटी नॉमिनल रेंज उसी से डील करती हैं एंड विजिबिलिटी के ऑफ कोर्स। राइट वेयरएज ज्योग्राफिकल रेंज डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। राइट। तो जहां वो कह रहे हैं कि फर्स्ट साइट या लास्ट साइट, हो सकता है कि मैं उसकी रेंज में आ चुका हूं ज्योग्राफिकल रेंज में, बट मेरे को वो लाइट नहीं दिखी होगी। यस दैट्स पॉसिबल, यस वेरी मच। हाँ, एंड वेयर एज रेजिंग एंड डिपिंग की जहां वो बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे हॉरिजन पे ही आई है, तो हम ज्योग्राफिकल रेंज की ही बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके बेटा, रेजिंग डिपिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। रेजिंग डिपिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है दैट द लाइट इज एट इट्स GR, जियोग्राफिकल रेंज, डिक्शनरी मीनिंग जो होता है। बट क्वेश्चन में इस टर्म को लूजली यूज कर लिया जाता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि भाई जो पेपर सेटर है उसने ये ज्योग्राफिकल रेंज ही यूज करनी है यहाँ पे या PLR यूज करनी है। सो वी नीड टू कंपेयर। ओके, वी कैन नॉट टेक इट कि भाई इन्होंने रेजिंग डिपिंग टर्म यूज कर लिया, अब हम जियोग्राफिकल रेंज लेके आगे सॉल्व कर देंगे। नो, यू शुड नॉट डू दैट। You should still be checking or comparing it with the PLR, and whichever is the shorter of the two, please use that. Okay beta, got it? Understood बेटा? ये ओके ओके। अच्छा, अब एक और डाउट था बेटा कि ये जो फॉर्मूला है ये 2.08 से 2.095 हो गया है। आप कैप्टन पुरी हमें भी पढ़ाया था उन्होंने, तो ही वॉज ए वेरी
thorough with Chartwrok, so I remember him. तो अब क्या हुआ है बेटा कि जब उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा था ना, that time the formula which was being used was 2.08 only. Now the formula which we use is 2.095. इसका रीजन क्या है? Let me show you. रीजन इसका ये है बेटा कि जब भी हम किसी लाइट की जियोग्राफिकल रेंज को कंसिडर करते हैं, इट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय द हाइट ऑफ द लाइट एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर. ओके, सो पहले आप देखो हर एक फील्ड में एडवांसमेंट तो होती है. सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ एडवांसमेंट इन चार्टवर्क. हम सोचते हैं चार्टवर्क बहुत पुराना है, और चार्टवर्क में भी बेटा धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई है. So this is one example of how this advancement has happened. Now, जब पुरी सर ने वो बुक लिखी थी तब तक हम ये सोचते थे that if we draw a line of sight, let us say कि हमने इसकी geographical range हमने निकालनी है. From the top of the light, if you draw a tangent to the surface of Earth, we used to consider that this much is the geographical range. Okay, but later on we came to know कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, because of the atmosphere the light gets refracted. Okay, the light gets refracted, there is a refraction. ये करेक्शन हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में भी लगाते हैं, एल्टीट्यूड करेक्शंस में. सो यू विल सी ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, लेट मी मेक इट विथ ए डिफरेंट कलर, ब्लू कलर. जो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, आप देखोगे कि ये थोड़ी सी कर्व्ड है. It is curved. This basically represents the path followed by a ray of light. अब ये कर्व्ड क्यों है? ये कर्व्ड है रिफ्रैक्शन की वजह से, और इस कर्व की वजह से हमारी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है. सो जो वो 2.08 था, that was because of the exact tangent or you can say line of sight. The 2.095 range considers refraction because of atmosphere and the range has slightly increased. That is why the formula has changed over from 2.08 to 2.095. तो बेटा ये फीट वाला फॉर्मूला ये यूज करना 1.15 वाला. बेटा हमारे जो एग्जाम में चार्ट्स आते हैं, आई बिलीव ऑल आर इन मीटर्स. So you should use the meters formula straight away. इन केस फीट वाला आ गया तो उसमें 1.15 वाला यूज करना है या उसका भी वैल्यू चेंज हुई है कुछ? बेटा दोनों कर सकते हो आप. आई वुड रिकमेंड कि आप फीट टू मीटर कन्वर्ट कर लो, दैट वुड बी बेटर, है ना. 3.33 फिगर इज नोन टू अस rather than remembering a separate formula for it, है ना. But if you are comfortable with using two formulas for feet and meter, it's perfectly fine. ठीक है सर, इस सेकंड मिनट में ये यूज करते थे ना दोनों, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. ठीक है सर, थैंक यू, गॉट इट. ओके बेटा. So all doubts I hope till now are sorted out. सर अगर मुझे विजिबिलिटी ना गिवन हो और रेजिंग एंड डिपिंग का क्वेश्चन आ जाए तो मैं ज्योग्राफिकल रेंज यूज कर लूं सर डायरेक्ट? नहीं बेटा, ऐसे केस में ना अगर विजिबिलिटी क्वेश्चन में ना गिवन हो और उन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट साइटेड और लास्ट साइटेड है, ऐसे केसेस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि विजिबिलिटी 10 माइल्स है. यस सर, फर्स्ट साइटेड लास्ट साइटेड में तो ऑफ कोर्स मैं 10 माइल्स लेके ही चलूंगा. अगर वो रेज एंड डिप की बात कर रहा है, और फिर क्योंकि सर एस के पुरी सर की बुक में लिखा हुआ है द लाइट इज सेड टू बी रेज्ड और डिप्ड व्हेन ज्योग्राफिकल रेंज ऑफ लाइट इज यूज्ड, एंड द वर्ड फर्स्ट साइटेड एंड लास्ट साइटेड इज यूज्ड व्हेन ल्यूमिनस रेंज इज यूज्ड. बेटा दैट्स वेरी मच राइट. एज आई टोल्ड यू, सर ने जो लिखा है डिक्शनरी मीनिंग एग्जैक्टली यही है. बट कहीं सर पता चले हम लोग ल्यूमिनस रेंज यूज करिए और वो ज्योग्राफिकल रेंज से सॉल्यूशन किया हुआ उस सर्वेयर के पास. नो बेटा, नो नो, दैट विल नेवर हैपन. You can mention it in your solution that since the visibility is not mentioned, we are assuming the visibility to be 10 miles, finding whichever is the shorter of the two and using it. ठीक है सर. Okay. Okay beta. Okay, so January batch beta, January batch, December batch, almanacs and calculators are with you.
Yes, sir. Yes, So, sir. Yes, sir. very good, beta. So let me open up the presentation. Let's do some basic concepts of navigation. Okay, just give me 1 minute. ओके, तो बेटा सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सेलिंग जो होती है, अच्छा नंबर 1 बेटा, व्हाट इज सेलिंग? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय सेलिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलिंग्स आर देयर? एनीवन? Sir, plain, parallel, marketer, or GC. Very good. So plain selling, parallel selling, marketer selling, GC selling, great circle selling, and एक और है that is composite selling. So ये सेलिंग्स हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. So what are these सेलिंग्स बेटा? क्या हैं ये सेलिंग्स? कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? ओके, बहुत सिंपल चीज है बेटा. ये सिंपल चीज ऐसे है कि ये जो सेलिंग्स हैं, जितने भी मेथड अभी हमने देखे, पैरेलल सेलिंग, प्लेन सेलिंग, मार्केटर सेलिंग, ग्रेट सर्कल सेलिंग, कॉम्पोजिट सेलिंग, ये सारे के सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनके साथ हम लोग अर्थ पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोर्स और डिस्टेंस निकाल सकते हैं. Now, as a navigator, our basic job is to take the ship from point A to point B. अब शिप को अगर हमने point A to point B लेके जाना है, there are no Google Maps, no roads, so you have to find your way out. For finding our way out, we have the compass, we have the log. So to reach a certain position, we need to know what course we should be steering. And second thing, we should know what is the distance we should steam to reach to our destination. So इन दोनों चीजों को निकालने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स निकाले हैं. ये सेलिंग वही मेथड्स हैं. इनमें से सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सेलिंग जो है, दैट इज नोन एज पैरेलल सेलिंग. इसे पैरेलल सेलिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस सेलिंग इज यूज्ड व्हेन वी मूव अलोंग द पैरेलल ऑफ ए लैटिट्यूड. आप किसी भी पैरेलल ऑफ ए लैटिट्यूड पे मूव करते हो, मींस योर लैटिट्यूड रिमेन सेम, उसको हम लोग पैरेलल सेलिंग बोलते हैं. वी कैन ओनली गो इन द ईस्टर्ली और वेस्टर्ली डायरेक्शन. दो ही कोर्सेज हो सकते हैं पैरेलल सेलिंग में. और पैरेलल सेलिंग में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो कैन यू टेल मी बेटा, व्हाट इज द पैरेलल सेलिंग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस व्हेन वी आर डूइंग पैरेलल सेलिंग? Departure upon d long equals to cos m lat. Very good, beta. So this is the formula which we use for parallel sailing. Departure is equal to d long into cos of m lat, or you can say departure upon d long is equal to cos of m lat. So ये पहला basic formula है बेटा, the most simplest form of sailing. तो बेटा अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू बी नोटेड डाउन. तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. नेविगेशन में इतने फॉर्मूले नहीं हैं कि आप दोनों हाथों की फिंगर्स पे काउंट कर सको, मींस लेस देन 10.
Okay, less than 10 formulas you have in the entire navigation. तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद हो. So we should not be making a mistake in the formula, because in phase 1, a mistake made in the formula is considered as a principal error. So whichever question you do with a wrong formula, consider that question lost. Okay, so ये पहला formula है बेटा. So parallel sailing, departure is equal to d long into cos of mz. और ये departure क्या है? Departure is basically the distance between the two positions. Our departure position, the position where we have left, starting position, and our destination. So course, as I told you, is either east or west. तो वो हमें लॉन्जिट्यूड को देखते ही पता चल जाता है कि हम ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेस्टर्ली डायरेक्शन में. सो देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड फॉर फाइंडिंग द कोर्स. तो ये है बेटा पैरेलल सेलिंग फॉर्मूला, द फर्स्ट वन. अब चलते हैं आगे. नाउ वी गो टू प्लेन सेलिंग. बिफोर वी गो टू प्लेन सेलिंग बेटा, लेट्स रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज बेसिकली क्लास 8th मैथमेटिक्स. If this is a right angle triangle and I have this angle theta, okay, this is the angle I am considering. So let's mark this as ABC. Beta, can you tell me which side is the hypotenuse? C. AC. Okay, AC is the hypotenuse. Which side is the perpendicular? AB. Okay, AB. Which side is the base? BC sir, BC. BC is the base. तो मैंने hypotenuse, perpendicular, base तीनों को यहाँ पे लिख दिया है. Okay. तो बेटा everybody agrees? No sir, AB base होगा, BC perpendicular होगा. Okay. So there is another option that this is perpendicular and this is base. Yes sir, यही है. Okay. AB base है और BC perpendicular. Very good. So बेटा ये पहली चीज है जिसके साथ आप बड़ी आसानी से नेविगेशन में फेल हो सकते हो. Not only navigation, any subject where a numerical comes, whether it is cargo work. कार्गो वर्क में जब आप टैंकर कैलकुलेशन करोगे तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा. और इट इज नेवल आर्किटेक्चर स्टेबिलिटी, वहां पर जब आप ट्रिम और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज होगा. सो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएंगे. तो इसको ध्यान रखना है बेटा. Whenever we consider about base and perpendicular, we have to see what is the angle being considered. इसमें मैंने आपको एंगल दिया था ये वाला थीटा एंगल. जो भी साइड एंगल के साथ टच करती है अदर देन द हाइपोटेनस, वो साइड हमेशा बेस होती है. सो इन दिस क्वेश्चन AB इज द बेस. हाँ, अगर मैं थीटा एंगल C को लेता, इफ आई हैड टेकन थीटा एज एंगल C, तो बेस BC बनता. And the side which does not touch the angle which you are considering, वो होगा perpendicular. So in this case, BC is going to be the perpendicular. अब ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन रेशियोज यूज करते हैं बेटा. साइन थीटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बेटा? Sir, P upon H. Very good. Perpendicular upon hypotenuse. The second ratio which we use is cos theta. B upon H. Very good. Base upon hypotenuse. And the third one is tangent theta. So tangent is P by B. perpendicular upon base. So always remember this beta. Some people have curly brown hair till painted black. Okay. So पंडित पत्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, whatever you use it. So remember these terms. Okay, this is the basis of almost all the numericals which we do in whichever subject they are. So never forget this.
So this is clear better now? Sin theta, cos theta, tan theta, all clear? Now let's use these concepts in plane sailing. जो ये plane sailing technique है बेटा, this sailing technique was used initially when we started venturing into the sea. जब हमने sea में जाना शुरू किया, there was an immediate need of calculating the courses and distances. उस टाइम पे trigonometry already develop हो चुकी थी, and we started using this trigonometry for calculating our courses and distances. कैसे यूज किया हमने? We consider the surface of Earth as a plane surface, और इस प्लेन सरफेस पे हमने अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दोनों को ज्वाइन किया, एंड इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो स्क्रीन पे. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर नॉर्थ ईस्टर्ली क्वाड्रेंट. So if you are going from position A to position B, ये ट्रायंगल हमने कैसे बनाई? AB side becomes the hypotenuse, and AB is actually the distance between our initial and final positions. We draw a vertical line, north-south line. This line basically gives us the D-lat, difference of latitude between our initial position and final position, and we draw a horizontal line. The horizontal line gives us the departure between A and B. Departure means the actual east-west distance between the two positions. That is the departure. So this is the triangle which we make for plane sailing. And in this triangle, this angle, angle A, is basically the course. The course, whenever we use in plane sailing, is always used in the quadrantal notation. Quadrantal notation means the course is measured with reference to north or south. Okay, we always represent it with reference from north or south. North so many degrees east, or north so many degrees west. South so many degrees east, south so many degrees west. So we always use the course in the quadrantal notation. We never use it in the three-figure notation. Okay. So इस triangle में बेटा हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं. If you utilize the concept of cos course, okay, cos theta is equal to base upon hypotenuse. So cos of course is equal to base, which is d-lat, upon hypotenuse, which is distance. So this gives us the first formula, d-lat equal to distance cos course. If you use the ratio of sin theta or sin course, it gives us our second formula, departure is equal to distance sin course. Okay. Sin course, if you use perpendicular upon hypotenuse, that is departure upon distance. So this gives us this formula, departure is equal to distance sin course. And the third formula is given by the third ratio, which is tangent theta. So tangent course is equal to departure upon d-lat, perpendicular upon base, departure upon d-lat. These are the three formulas which we use in plane sailing. So beta, you can note down these formulas also, okay, or you can just take a screenshot of this and keep it with you, though they are there in the Pragnab book also. Done beta, formulas revised? Yes, sir. Okay. Okay. Now beta, when we use plane sailing, we use different triangles for different quadrants. अभी जो triangle हमने देखी थी, that was the triangle for northeast quadrant.
If we are going in a different quadrant, if we are going in southeast quadrant, then the triangle would be this one. The distance would be this way. This is our starting position. The red color dot which I am making is basically our starting position in all the cases, and the green color one which I am making is our destination. The blue one is our destination. This is our destination. Okay, if you are going in the southwesterly quadrant, then the triangle would be this one, southwesterly quadrant. Northwesterly, the triangle is going to be this one. So these are the four triangles which we use. The formulas are applicable in whichever direction you go. So अब बेटा इन formulas का जो basic use है वो क्या है? Using these formulas, we can easily find the course and distance between any two positions. If latitude and longitude of two positions are given to you, you can easily find out the courses and distances between them. Secondly, अगर आपको कोई initial position दे दी जाती है, they give you a initial position and they give you a certain course and a certain distance, then you can easily find out the position arrived by using these formulas, these three formulas. Okay. तो ये बेटा आपकी जो प्रैकनैप की बुक है उसमें जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, लेट मी टेल यू व्हिच चैप्टर इज दैट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Okay, beta. So this is our chapter number 5 in the book, plane and parallel sailing. So इसमें आपको solved example उन्होंने दी हुई हैं. So there are solved example about these basic problems, and there is a exercise where they give you the starting position, course and distance. You have to find out the final position. And second type of question is they give you two positions and you need to find the course and distance between them. So बेटा पहला जो आपका आज का जो जॉब है वो ये कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है. So please practice these questions well. ये जो कॉन्सेप्ट है ये इट्स ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन नेविगेशन. इस पे एज सच कोई फेज 1 पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं आने वाला. दिस इज कंसिडर्ड बिलो अवर लेवल, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी अदर क्वेश्चंस. आप अगर जीसी कंपोजिट के सवाल करोगे उनमें भी ये चीज यूज होती है. अगर आप प्लॉटिंग, स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन करोगे उनमें भी ये चीज यूज होती है. एंड दिस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड इन चार्ट वर्क. जैसे मैंने रेंडेवू का आपको बताया था, if the positions are too much far away and cannot be plotted on the chart, तो उनमें जो course और distance आएगा वो इन्हीं के साथ आएगा. So this is the first exercise for plane and parallel sailing which you have to practice. अब बेटा मुझे ये बताओ कि shall I go ahead and do Mercator sailing also or you want to do it in the next session? सर अभी कर लेते हैं. सर अभी कर लेते हैं. Very good बेटा. So let me show you about Mercator sailing also. अब बेटा ये जो सेलिंग मैंने आपको बताई, प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग, इसमें आई टोल्ड यू दैट वी कंसिडर द सरफेस ऑफ अर्थ एज ए प्लेन सरफेस. सो जब हमने इनको यूज करना शुरू किया प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग को, वी कैलकुलेटेड अवर कोर्सेज एंड डिस्टेंसेस एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग देम. धीरे धीरे हमारी जो शिप्स है ये बड़े होते गए. एज द शिप साइज keeps becoming bigger and bigger, our destination also kept on becoming farther and farther away. Distance increase होना शुरू हो गया. What we noticed then was, जैसे हमारा distance increase हुआ, we realized कि ये जो sailing method है, ये हमें correct distances और courses नहीं दे रहा है. Okay, just a minute. I have not shared my screen. Let me share it. So what we realized was
that this sailing method is not giving us correct courses and distances. Now, when we analyzed it, we came to know where is the error. Now, in this form, in this method, we have considered the earth to be a plane surface. जो ये trigonometry है, ये एक plane right angle triangle का solution है. So हमने earth surface को consider किया plane, but actual in reality the earth surface is not plane surface. It is curved surface. It's a 3D surface. So that is where the error was coming in. Now, till the time the distances were lesser, this error was also very, very less, and it was not appreciable, and it could be easily neglected. But जैसे जैसे distance बड़े होने लगे, the error also became appreciable. So then we came to know that we will have to consider the curvature of the earth in our calculation. So हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि if the distance is less than 600 miles, the answers are okay, accurate enough, the error can be easily neglected. So we will use this sailing for distances less than 600 miles. When the distance becomes more than 600, then we do not use this method of sailing as the errors start to become appreciable. So फिर हम कौन सा method use करते हैं? Then we use Mercator sailing. So what is the difference in Mercator sailing? If you see in this triangle, ये जो triangle की तीनों side है, एक side है distance, दूसरी side है delat और तीसरी side है departure. इन तीनों side को measure करने के लिए हमने कौन सा स्केल यूज किया है? हमने लैटिट्यूड स्केल यूज किया है. लैटिट्यूड स्केल. हमारे मर्केटर चार्ट पे दो स्केल्स होते हैं बेटा, वन ऑन द वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल साइड, अनदर वन ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड. वर्टिकल साइड वाला जो स्केल है दैट्स द लैटिट्यूड स्केल, हॉरिजॉन्टल साइड वाला जो स्केल है दैट्स द लॉन्जिट्यूड स्केल. ये दोनों स्केल डिफरेंट होते हैं, बोथ आर डिफरेंट. इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमने लैटिट्यूड स्केल को यूज किया है. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स which is equal to 1 minute of latitude. Delat is obviously measured in latitude scale. Departure is also measured in latitude scale. Now Mercator sailing में हमने सिर्फ एक चेंज किया, हमने अपने स्केल को लैटिट्यूड स्केल से चेंज करके लॉन्जिट्यूड स्केल में कन्वर्ट कर दिया. कैसे कन्वर्ट किया? इंस्टेड ऑफ डिपार्चर वी मेड दिस साइड एज डी लॉन्ग. तो हमने ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड थी इसे डिपार्चर की जगह पे डी लॉन्ग बना दिया. इट इज डी लॉन्ग. और जो बेस वाली साइड थी, वर्टिकल साइड थी, इंस्टेड ऑफ डी लैट वी कन्वर्टेड इट इनटू DMP. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट DMP is basically the number of times 1 minute of longitude can be placed between two parallels. So this DMP is basically measuring this side in terms of longitude units or 1 minute of longitude. Meridional part is nothing but 1 minute of longitude. Okay. Just give me 1 minute, beta. हाँ बोलो बेटा, बोलो ऋषभ. Okay, beta, just give me 5 minutes. I am holding an online class. I'll be there. Okay. Okay. So DMP is measured in longitude scale. तो हमने ये दोनों साइड को longitude scale में convert कर दिया. We will not use departure. We will not use delat. Instead, we will use D long and DMP. D long हमें दोनों पोजीशन से मिल जाएगा. We have the longitudes available to us. DMP हमें मेरिडियनल पार्ट टेबल से मिलता है. So meridional part table will give us the DMP between two latitudes. अब बेटा इस ट्रायंगल को यूज करने में एक प्रॉब्लम आई. प्रॉब्लम ये आ गई कि जो डिस्टेंस है इसके यूनिट तो फिक्स्ड है. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स. सो डिस्टेंस के यूनिट को हम लोग लॉन्जिट्यूड में कन्वर्ट कर नहीं सकते. सो मर्केटर सेलिंग की जो ट्रायंगल है उसमें जो ये थर्ड वाली साइड है
इस थर्ड साइड को हम कोई नाम नहीं देते, इट इज अननेम्ड, नो नेम इज गिवन। हम इसे कैलकुलेट भी नहीं करते। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, देन हाउ डू वी फाइंड आउट द डिस्टेंस? For finding the distance, we have to go back to plane and parallel sailing formula. So distance के लिए हम फिर से plane and parallel sailing formula ही use करते हैं. For course, we use a different formula now. And what is that formula? Tangent course now becomes d long upon dmp. So tangent course will be perpendicular upon base, which is d long upon dmp. This is the only new formula which we use in Mercator sailing. Okay. Another doubt which can come to your mind is कि सर अगर हम डिस्टेंस के लिए पुराना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो एक्यूरेसी कहाँ से आई? तो डिस्टेंस तो इनएक्यूरेट ही रह गया। एक्यूरेसी आती है बेटा डिस्टेंस में, कैसे आती है? द फॉर्मूला विच यू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, उसमें तो कोर्स यूज होगा। ओके, लेट मी शो यू। ये फॉर्मूले हैं हमारे, और इनमें से हम ये जो पहला फॉर्मूला है d lat is equal to distance cos course, this is the formula we use for calculating the distance. मैथमेटिकली हम इसे भी यूज कर सकते हैं, you can use this one also, but fundamentally हम इस फॉर्मूला को डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? Because departure is something which is not present actually on the chart. What is present on the chart actually is d long and d lat. So that is why this formula is not used for calculating distance. Distance के लिए हमेशा d lat वाला formula ही use करते हैं। So in this formula, see, if you want to calculate distance, अगर d lat आपके पास है, कोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये जो कोर्स आप यहाँ पे लगाओगे, this course will be calculated not from this formula but from the Mercator formula. The Mercator formula will give us a accurate course which used in this will give us a accurate distance. So that is how the accuracy comes in. So Mercator sailing में भी बेटा दो टाइप की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सेम बिल्कुल सिमिलर। Initial position, final position is given to you and you need to calculate course and distance. और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको अगर इनिशियल पोजीशन दे दी जाए, एक कोर्स और डिस्टेंस दे दिया जाए, यूजिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन अराइव्ड। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। ट्रैकनैव में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो प्लेन एंड पैरेलल के बाद आप देखोगे, दैट विल बी मर्केटर सेलिंग एक्सरसाइज। तो प्लीज प्रैक्टिस बोथ दीज एक्सरसाइजेज। दीज आर द ओनली फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड। ये सिर्फ एक नया फॉर्मूला है जो मर्केटर सेलिंग में यूज होता है। So any doubts or anything you want to clarify, beta? Okay, very good. Great. बेटा we will बोलो जी। एक क्वेश्चन था सर, ये जैसे हम we use latitude for to calculate the nautical miles, why we cannot use the longitude? Because of the, क्योंकि वो पोल्स में जाके उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। Only this is the reason, right sir? बेटा बेसिक रीजन ये है कि जो 1 minute of longitude है, एक्चुअली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज नॉट ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ। इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा लेंथी है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो 1 minute ऑफ लॉन्जिट्यूड छोटा हो रहा है और पोल पे जाके ये 0 हो जाता है। तो वी कैन नॉट यूज इट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट। बट सर स्टैंडर्ड तो अपना लैटिट्यूड भी नहीं है ना सर? अर्थ के सरफेस पे स्टैंडर्ड है बेटा। अर्थ के सरफेस पे 1852.3 मिनट is 1 minute of latitude wherever you go, equator, pole, Greenwich meridian, international dateline, everywhere. ओके सर। और सर एक क्वेश्चन ये था कि सर ये वेयर वी पुट द करंट इन द चार्टवर्क, जैसे इनिशियल पोजीशन में कब डालते हैं और फाइनल पोजीशन में कब हम कब लगाते हैं करंट को, ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर।
ओके क्वेश्चन में क्या लिखा होगा सर ऐसा? ओके। जब भी कभी ये डाउट हो कि करंट को कहाँ लगाना है, इनिशियल पोजीशन पे करंट लगाएं या कोर्स टू स्टीयर लगाएं, क्या लगाएं, तो आप चेक करो whether it is a question which tells you to allow for the current or it is a question which tells you to counteract the current. Okay, ये बेटा चेक कर पाते हो कि is it allowing the current or counteracting the current, या इसमें भी डाउट आता है? बता दीजिए सर ये भी एक बार। ओके अभी बता रहा हूँ बेटा। If they give you a course to steer and they give you a certain current, उन्होंने आपको कोर्स टू स्टीयर दे दिया, मतलब स्टीयर तो वही कोर्स करना है। ओके, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर फाइनल पोजीशन वेयर इट गोज, आप तो उस कोर्स को स्टीयर कर रहे हो और एक करंट उन्होंने दे दिया है। दिस इज नोन एज अलाउइंग फॉर करंट। आप करंट को अलाउ कर रहे हो कि भैया मुझे जहां लेके जाना है ले जाओ, आई अलाउ यू, दिस इज अलाउइंग फॉर करंट। काउंटर एक्टिंग फॉर करंट क्या होता है? आपको उन्होंने कोई कोर्स टू स्टीयर नहीं दिया, आपको उन्होंने डेस्टिनेशन दे दिया कि ये पायलट पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचना है। सो यू नो आई हैव टू रीच टू माय डेस्टिनेशन। ठीक है, सो जब आपको ये पता चल गया तो जो भी वो डेस्टिनेशन को पहुंचने का कोर्स है, दैट शुड बी योर कोर्स मेड गुड। आपको पता चल गया कि मुझे पहुंचना तो यही है। नाउ दिस इज नोन एज काउंटर एक्टिंग द करंट, क्योंकि आप करंट को काउंटर एक्ट करोगे, करंट के इफेक्ट को पहले से ही विजुअलाइज करके कैंसिल करोगे, उस हिसाब से ऐसा एक कोर्स स्टीयर निकालोगे ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। दिस इज नोन एज काउंटर एक्टिंग द करंट। काउंटर एक्टिंग में आपको कोर्स मेड गुड वेक्टर मिलता है, अलाउइंग में आपको कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर मिलता है। जब भी आप अब अलाउ काउंटर एक्ट आ गया बेटा, ये दोनों क्लियर हो गए? जी सर। जब भी आपको अलाउ करने के लिए बोला जाता है तो आप पहले कोर्स स्टीयर लगाते हो, फिर करंट लगाते हो, करंट बाद में लगाते हैं। ओके, और जब भी काउंटरएक्ट करने के लिए बोला जाता है तो करंट पहले लगाते हैं, कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर बाद में लगता है। ओके बेटा? सर ये कॉन्ट्रैक्ट करंट रिवर्स पोजीशन में लगेगा ना सीएमजी की? ओके, नहीं बेटा, जैसी पोजीशन में है वैसे ही लगेगा इनिशियल पोजीशन में। मैं आपके साथ दोबारा टुवर्ड्स आवर पोजीशन में लगेगा ना सर, अपनी पोजीशन मतलब टुवर्ड्स आवर पोजीशन। मैं ये कॉन्सेप्ट जो ए है टू बी ज्वाइन कर दिया सर। ओके, और बी मैं बेटा होल्ड ऑन डोंट वरी, ठीक है मैं अगली क्लास में ये आपके साथ ना दोबारा से रिविजिट कर लूंगा। वी विल गो इनटू काउंटर एक्टिंग एंड अलाउइंग द करंट। ओके, इसको चार्ट पे करके देख लेंगे। अभी एक्चुअली मेरे पास पंचकूला कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, they have their filing session, so I will just go there, they are waiting for me. So अगले सेशन में just remind me, we will revise this concept, allowing and counteracting. ओके बेटा? ओके सर। ओके, अच्छा बेटा, तुम में से नवंबर बैच एनी कैंडिडेट्स आर प्लानिंग टू सिट इन द एमएमडी रिटन एग्जाम नाउ व्हिच आर हैपनिंग इन मार्च? Sir, I am Yes, sir. planning to sit. ओके, कौन Sir, से but not सेंटर? here in Mumbai. मुंबई सेंटर? जी सर। ओके, तो मुंबई के लिए बेटा आप फाइल जो है ये थ्रू द इंस्टीट्यूट भेज रहे हो और यू आर सेंडिंग इट इंडिपेंडेंटली? सर इंडिपेंडेंटली। ओके, तो सेल्फ अटेस्ट करके डायरेक्टली फाइल भेज रहे हो वहाँ पे। एंड जो आपकी डेट्स हैं, आई थिंक 18th इज द लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट एंड बुकिंग ना? सर 18th of February. 18th of February, that's right. I saw some notice, some circular from Mumbai MMD. So there they said, I think 9th to 18th is the window which they have given. Anybody is aware? 9 to 18 सर पता लग गया अभी। मैं I'll check the circular also. सर दिल्ली के लिए है कुछ? नहीं बेटा, दिल्ली का नोटिस अभी आया नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है अभी। दिल्ली नोटिस यूजुअली कम्स लिटिल लेट।
ओके चलो जनवरी एनी बैच वालों के मई में एग्जाम होंगे?